Hi, I'm Adinath Kothare and you're watching me on Filmibeat. Raftaar kind of boosted my confidence over there. बहुत ही प्यारा बंदा है, बहुत ही down to earth है. Rockstar है वो. I think yesterday the Chandrayaan landed on the moon and people there were all memes of the song Chandra circulating everywhere. They gave the real Prudential World Cup, which the team had held in '83 and we held it. They got it out from the museum and they gave it to us. एक अच्छी कहानी बताना एज अ एक्टर, एज अ डायरेक्टर, एज अ प्रोड्यूसर, वॉट एवर इट इज, आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट स्टोरी. हेलो एवरीवन, मैं हूं सुरभि रन सिंह और आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में. आज हमारे साथ वो हैं जो एक एक्टर के साथ साथ प्रोड्यूसर हैं एंड डायरेक्टर भी हैं, आदिनाथ कोठारे. आपका वेलकम है फिल्मी बीट में. थैंक यू सो मच. सो जियो सिनेमा पर बजाओ आ चुकी है. क्या कुछ आप बताना चाहेंगे आपके नेगेटिव कैरेक्टर के बारे में? वेल, इट्स समथिंग आई हैव नेवर डन बिफोर. बहुत ही हटके, बहुत ही अलग किरदार है जो मैंने निभाया है. ओजी मेरे किरदार का नाम है. वो एक दिल्ली रैपर है, दिल्लीआइट रैपर. ये दोनों चीज़ों से मेरा कुछ भी ताल्लुक़ नहीं था और आई हैड टू रियली वर्क हार्ड टू learn both the things and make them look natural. I'm a Mumbai kid, I'm a Bombay boy, and for me the Delhi accent, Punjabi mix Delhi, वो accent पकड़ना, it was very challenging, not difficult, challenging, but अच्छी टीम थी. वर्कशॉप्स की हमने. डायलेक्ट कोच था सुनील सोनी was my dialect coach. शिवा, Saptaraj, the directors, they all were very supportive. We had a great team and all. So बहुत मेहनत करनी पड़ी. But the Delhi accent and plus the rapper वाला vibe, भाई ये दोनों चीज़ें एक साथ, वो भी then I have to make them look very natural and genuine in front of the camera. कैसे ना, the camera, you can't lie to the camera. If you are going to fake an accent, if you are going to do that, वो पकड़ में आ जाता है easily. Public बहुत smart है, उन लोगों को लगता है कि this is very pretentious what he's doing. So I was very scared of that. I was very nervous about that. मेरी कास्टिंग का क्रेडिट जाता है तेजकरण सिंह. ही इज़ द प्रोग्रामिंग हेड एट जियो सिनेमा. And he was very confident that Adi, you can pull this off. ये तेरे लिए बना है कैरेक्टर, तू ही कर सकता है. क्या बात कर रहा है? I've never done something like this, but he trusted me. The directors were also pretty nervous on the first day of shoot because they didn't know like what's going to actually happen. They knew they knew I was a good actor and all, but will he be able to pull this off? So सबके पेट में butterflies थे. So until the first day the camera rolled, my heart was in my throat, in my mouth almost. But the day I came on the set, the first day of set, oh yeah, and जब पहला दिन shooting का, the first scene that my directors gave me to perform was the main confrontation scene with Raftaar, which is one main high point in the web series. And I was like, भाई तू ऐसे क्यों कर रहे, बच्चे की जान लेगा तू. फर्स्ट सीन कैसे करूँ मैं यार, मुझे एक्शन मुझे अभी तक ठीक से पता नहीं आ रही नहीं आ रही, वो नीड सम वार्म अप एंड ऑल. लाइक नहीं तू कर पाएगा यार, डोंट वरी यार. लाइक ठीक है, अभी क्या जो होगा देखा जाएगा. सो when I came on the set and I met the directors, they also like comforting me, don't worry सब हो जाएगा. We read the lines with him. But then I met Raftaar. I went to Raftaar's vanity. I sat with him and I told him कि भाई I want to rehearse with you. मुझे थोड़ा comfortable हो. Like, and that is where my confidence level slightly went up because Raftaar kind of boosted my confidence over there. He was very supportive. He was very helpful. बहुत ही प्यारा बंदा है, बहुत ही down to earth है. Rockstar है वो, very down to earth. So we were jamming with the lines. I was saying my parts, he was saying his lines, and he was giving me some suggestions कि भाई इसको ना तो ऐसे ले. तो मैं उसको भी फिर मेरा भी थोड़ा कॉन्फिडेंस, मैं भी थोड़ा इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करना चाह रहा था, जुर्रत कर रहा था. तो मैं उससे पूछ रहा था कि भाई इसको ना थोड़ा, ये लाइन थोड़ा बोरिंग बन रहा है तो उसको ना थोड़ा वो रैपर वाला वाइब दे दो ना, क्या बोलूँ मैं इधर. तो नहीं वुड से कि ऐसे ले ले उसको, ऐसे ये वर्ड्स यूज़ करें. सो ऐसे करते करते फिर डायरेक्टर्स के इनपुट्स, फिर को एक्टर्स भी थे. साहिल खट्टर, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, सिंस '83 भी नो ईच अदर. सो इवन ही वाज हेल्पिंग मी विद माय लाइन्स एंड स्टफ, एंड एवरीबॉडी वाज, इट वाज अ नाइस टीम वर्क दैट वाज हैपनिंग. तो मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था. एंड देन व्हेन द फर्स्ट शॉट रोल्ड और पहला टेक हो गया एंड इट वाज, द डायरेक्टर शॉटेड ओके एंड एवरीबॉडी क्लैप्ड ऑन द सेट.
और the directors came to me and they hugged me and like, भाई nailed it, Shiv and Saptara, like you nailed it bro, like, क्या बात कर रहे हो seriously. The biggest compliment for me is the DOP came to me and like, bro I didn't know, मुझे लगा तू दिल्लीite है. And that was like, मेरा थोड़ा confidence बढ़ गया उधर कि like okay, मतलब आ रहा है, मतलब हम लोग we are not off the grid here, ठीक है, मतलब pretentious नहीं बन रहा है, public convince हो रही है इसका मतलब. So फिर करते करते धीरे धीरे we kind of built that character and अभी जब teaser और trailer आ गए और जब मेरा गाना आया, the song चल सरक, what reactions I got. Public couldn't believe it is me. So मेरे आधे दोस्त लोग और public, even the audience were saying that we didn't know this is you until you posted it on your profile. So yeah, that's a great compliment. That's a compliment that we actors, we always looking forward to. And yeah, I think I'm enjoying the audience reactions right now. They are loving the fact that I'm done something different. उन्हें बहुत मज़ा आ रहा है कि मुझे एक बहुत ही हटके किरदार में देखने के लिए उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है. And yes, I think that's what an actor looks forward to. जैसे कि आपने कहा कि रफ्तार ने आपकी हेल्प की है, पर ऑफ कोर्स वो देख के और लोगों का रिएक्शन देख के कोई नहीं मानेगा कि आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ी है. थैंक यू सो मच, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू यार, बट बहुत मेहनत, बहुत पापड़ बेले है टू गेट दैट दिल्ली रैपर वाला वाइब. नॉट ईजी, डेफिनेटली नॉट ईजी. सो बजाओ काफ़ी लोगों ने अब तक देख ली होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी है उनके लिए थोड़ा बहुत आप स्टोरी. गो ऑन जियो सिनेमा एंड वॉच बजाओ. ये बहुत ही धमाल मस्ती वाला शो है, वेब सीरीज़ है, जिसमें आपको कोई कुछ दिमाग नहीं लगाना है. बहुत चिल वाला वाइब है. इट इज़ गॉट मैड कॉमेडी, हिलेरियस कॉमेडी एंड येस, आई थिंक इट्स वन ऑफ अ काइंड. अभी तक ऐसा हमने वेब सीरीज स्पेस में ऐसा एक आउट एंड आउट एंटरटेनर देखा नहीं है. लाइक आवारा पागल दीवाना या गोलमाल टाइप्स. वी नॉट सीन दैट जॉनर इन वेब स्पेस. सो आई थिंक दिस इज दैट काइंड ऑफ अ जॉनर ऑफ कॉमेडी एंड ह्यूमर. सो आई होप यू एंजॉय इट. ओके, रफ्तार के साथ आपने अपना एक्सपीरियंस बताया, बाकी के को एक्टर्स के साथ कैसा एक्सपीरियंस था आपका? माहिरा और बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था यार. आई एम टेलिंग यू, आई एन्जॉय डूइंग थिंग्स आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन. मुझे बहुत मज़ा आता है कि जब कुछ ऐसे चैलेंजिंग करने मिले, समथिंग आई हैव नॉट डन बिफोर. आई लुक फॉरवर्ड टू दैट. वो उसकी अभी मतलब चस्का लग गया उसका कि हर कैरेक्टर में कुछ नया करने मिले. आई कीप प्रेइंग फॉर दैट. ऑल्सो देयर इज सम गॉड्स ग्रेस ऑल्सो दैट that you get those kind of opportunities, and I've got it. Again, the next show that'll be coming after Bajao is a show on Z5. It's called Filmibeat. It's being directed by Sudhir Mishra and Sanjeev Kaul. उस शो में मैंने फिर से दिल्लीite कैरेक्टर किया. So मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ गया था मेरा बिकॉज ऑफ बजाओ, थैंक्स टू बजाओ. बट नहीं, मेहनत तो बहुत लेनी पड़ी और it was a great team again, and I'm just glad that filmmakers and producers and platforms are believing in me as an actor and believing the fact that this guy from Bombay, from Mumbai, can perform a character like this. It's a huge compliment an actor can get, that some makers are entrusting you with such a different character. Normally what happens is he's a Mumbai character, so इसको ऐसे मराठी वाला character दे दो. No, but these guys like Sudhir sir and all. Sudhir sir is the one who pushed me for this character in Filmibeat. So I'm really glad that people are seeing me in different characters. They want me as an actor to perform different characters. It's a great space for me as an actor. तो जितने भी आपने वेब शोज़ किए हैं, सारे किरदार को लोग बहुत पसंद करते हैं. आपका पर्सनल फेवरेट अगर मैं पूछूँ तो? अभी तक लाइक वेब सीरीज में क्रिमिनल सिटी ऑफ ड्रीम्स सीजन 2 में मेरा जो महेश आरोली का कैरेक्टर था, आई गॉट दैट वाज माय फर्स्ट कंटेंट, माय फर्स्ट हिंदी शो, दैट हिंदी कंटेंट दैट केम बिफोर 83. सो आई गॉट सच अमेजिंग फीडबैक्स फॉर दैट, एंड देयर वाज अ backstory also. There was a flashback to that character. There were 2 different timelines, and I had an amazing experience working with Nagesh sir. Nagesh Kukunur is a delight for an actor to work with. So yeah, so I think City of Dreams aaya, fir then 83 released, and then Criminal Justice happened, and then Chandramukhi, the Marathi film, that was a huge blockbuster. It was an amazing response I got for that.
people still talk. I think yesterday the Chandrayaan landed on the moon and people were there were all memes of the song Chandra circulating everywhere. It's quite hilarious. So yeah, it's really, I think I'm grateful to God, man, because we all keep working hard, but sometimes you need a little bit of grace to give you the right opportunities. So yeah, pretty 83 में भी आपके किरदार को कोई भूल नहीं सकता, उसकी अगर कोई एक मेमोरी मैं आपसे पूछूं तो क्या शेयर करना चाहोगे? Oof, 83 में memories, मतलब there are the whole experience, the whole journey was a memory, man. It's something I can never forget. I can tell my grandchildren about that. You know, I stood on the pitch in Lord's in London. I stood on the pitch in Oval, Tunbridge Wells. We stood on the ground where Kapil Dev scored that 170 not out, 175 not out. Everything about that film was unforgettable. The climax scene, yeah. I've spoken about this in many interviews, but that climax scene where we had to hold the World Cup, the Lord's Museum gave us the real World Cup to hold. They gave the real Prudential World Cup, which the team had held in 83, and we held it. They got it out from the museum and they gave it to us. And at that point, Ranveer and us entire team, we huddled around that cup and everybody broke down and everyone was crying. Everyone broke down at that emotional high. So that was something I still get goosebumps when I think of that. ओके, आपकी फिल्म पानी को नेशनल अवार्ड मिल चुका है, आप प्रोड्यूस भी करते हैं, डायरेक्ट भी करते हैं, एक्ट भी करते हैं, कैसे आप सब कुछ मैनेज करते हैं? हो जाता है यार, जब भी मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है वो मैं कर देता हूँ. जब भी एक्टर की रिक्वायरमेंट एक्टिंग आपको ज़्यादा क्या पसंद है, किसमें आप ज़्यादा एंजॉय करते हैं? आई एन्जॉय एवरीथिंग यार. आई लाइक बीइंग अ पार्ट ऑफ अ ग्रेट स्टोरी. एक अच्छी कहानी बताना, एज अ एक्टर, एज अ डायरेक्टर, एज अ प्रोड्यूसर, वॉट एवर इट इज, आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट स्टोरी इन व्हाटएवर फॉर्म. दैट्स माय हंगर. सो बजाओ वाले स्टाइल में कुछ आप ऑडियंस को कहना चाहेंगे, जैसे आपने जो लैंग्वेज आपने बोली है? भाई वो टेक में हो गया था वो सब, वो अभी नहीं होगा मेरे से. वो आप शो में देख लो. नहीं, मैं इधर पकड़ा जाऊंगा. अभी वो उसके लिए बहुत प्रैक्टिस, बहुत रिहर्सल की ज़रूरत है. बट बजाओ इज स्ट्रीमिंग ऑन जियो सिनेमा. प्लीज़ गो एंड वॉच इट.